Okay, assalamu alaikum everyone. Let's begin. So in this particular session, what I'm going to do is I'm going to complete this paper, March 2023, paper 3, variant 2. I actually started this paper on Tuesday, I think, but we were not able to complete it in time. I had to end the class a bit early. हमारे दो क्वेश्चन इससे रहते थे, question number 9 and 10. We will be doing those two questions today. And I spotted a careless error in another question later. So I'll just do that again as well. That was question number 6 from this paper. So in this particular session, I'm going to do questions 6, 9, and 10 from this paper. Okay. You can find the link to part 1 of this video in the description below. Part 1 का link आपको नीचे मिल रहा है, उसमें हमने questions 1 to 8 किए थे, but I'm going to be doing question number 6 from that as well, and also questions 9 and 10 after that, which we were not able to complete that day. All right, so let's begin with this. Let's start. So we're done with the rest of the questions. Let's start with question number 6. So it says express 5 sine theta plus 12 cos theta in the form r cos theta minus alpha, where r is greater than 0 and alpha is between 0 and pi over 2. This is one of the standard questions that you get in P3 trigonometry. So what do you have to do for this? You have these two formulas that you can just remember. R equals square root of a square plus b square, and also tan alpha equals b over a. Now, what are a and b here? If you look at the form that you're required to figure out, that's r cos of theta minus alpha. इसमें जो first function होता है, इस expression के अंदर वो आपकी first term होनी चाहिए, ठीक है? अभी इस केस के अंदर वैसे normally जो है वो already standard form के अंदर देता है. For example, अगर ये उसने पूछा होता, उसने वहां पे लिखा होता 12 cos theta plus 5 sin theta, उसने इसी तरह लिखा होता. Generally in 90-95% of cases that's what you get. But यहाँ पे उसने क्या किया, थोड़ा सा ट्रिक किया है, उसने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया. ऑलराइट, तो आपको r cos थीटा माइनस अल्फा वाली फॉर्म में करना है. उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा. तो आपको पहले तो इसको रीअरेंज करना है इस तरह से कि जो फॉर्म आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे cos चाहिए, तो इन दो टर्म्स में cos वाली टर्म पहले लिख लेनी है आपको. cos वाली टर्म पहले लिख लेनी है. सो लेट्स डू दैट. You can write it like this. First of all, you would say this expression 5 sin theta plus 12 cos theta, this can be written as 12 cos theta plus 5 sin theta. इसको पहले आपने correct order में लिख लेना है, ठीक है? Because यहाँ पे cos पहले आ रहा है इस form में, तो आपने इस पे भी cos पहले लिख लेना है. Once you're done with that, whatever is the second number, that is going to be your b. Whatever is the first number, that's going to be your a. ठीक है? a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी. b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. And all you have to do after this is just input these values in these two formulas. आपको इससे r और alpha मिल जाएगा, ठीक है? Let's do that. R equals square root of 12 squared plus 5 squared, and that gives you 13. The value of r turns out to be 13. And tan alpha equals b, which is 5 over 12. And you can find tan inverse of this. Now, if you look at the interval that's given, that's from 0 to pi over 2. तो आपने कैलकुलेटर अपना रेडियन मोड में रखना है. So you have to be careful with that. Degrees में आंसर नहीं देना है, यहाँ पे रेडियंस में रखना है. Interval is given in radians. Okay. So alpha here turns out to be tan inverse of 5 divided by 12, which is giving me 0.3948. That is what I'm getting. ठीक है? ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई. नॉर्मली उसने यहाँ पे ना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लिखा होता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए. यहाँ पे नहीं मेंशन, तो आप इसको मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे. ज्यादा लिख दें उससे, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए. तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है? सो नाउ व्हाट्स द फॉर्म दैट वी वर लुकिंग फॉर? r cos theta minus alpha. उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 into cos of theta minus 0.3948. And that's the form that you were looking for. ये आपने इस form में convert कर लिया, ठीक है? So that's done. That was the first part of this question.
Walaikum assalam, Hussein and Rayan. Let's do the next part now. Next part में वो कहता है, hence solve this equation 5 sine 2x plus 12 cos 2x equals 6 for x between 0 and pi. How do we do this now? Now, how is this related to the previous part? आपने पिछले part में क्या किया यहाँ पे? First part में आपने किया ये है कि आपके पास ये expression था 5 sine theta plus 12 cos theta. इसको आपने कन्वर्ट कर लिया है इस फॉर्म में 13 cos of theta minus 0.3948. This is what we have done in the previous part. ठीक है, ये एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब इसने जो इक्वेशन दी हुई है, compare it with what we did in the first part. उससे क्या चीज यहाँ पे सिमिलर है? आप देखिए लेफ्ट साइड पे जो आपके पास ये फॉर्म आ रही है, that's exactly what you have there in this equation as well. तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं? रिमेंबर, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है? यू नीड ओनली वन टाइप ऑफ फंक्शन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एंगल. यहाँ पे फंक्शंस एंगल्स तो ठीक है, दोनों 2x हैं, वी कुड वर्क विद दैट. द प्रॉब्लम इज एक साइन आ रहा है, एक कॉज आ रहा है, आपको सिर्फ एक फंक्शन चाहिए होता है. तो इसको एक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? उसके लिए हम इस फर्स्ट पार्ट को यूज करते हैं. हम कहते हैं कि अच्छा, अगर 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा हमारे पास होता तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता. अब ये नीचे इक्वेशन दी हुई है, उसमें थीटा की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x. तो आप जो राइट साइड वाली फॉर्म है उसमें भी थीटा की जगह पे अगर 2x डाल दें, ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में किया था, उसमें थीटा की जगह पे 2x अगर डाल दें तो ये इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो सकती है? वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज 13 cos of theta minus 0.3948. लेफ्ट साइड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Now what do we have on the right side? On the right side we have 6, and now we can solve this equation. Okay, and now how do we solve this equation? One way to do this is using substitution. So that's what we can do. ये जो अंदर वाला पूरा एंगल है, remember your angle is this whole thing. This whole thing is the angle. तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को किसी और लेटर से डिनोट कर लेते हैं. Let's say this is A. So we say let A equals theta minus 0.3948. All right. So now the equation therefore becomes 13 cos of A equal to 6. इस इक्वेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, A की वैल्यूज फिगर आउट कर लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर थीटा निकाल लेंगे उससे. ठीक है. So what does this become then? It becomes cos of A equal to 6 over 13. Find the basic angle. Cos alpha equals 6 over 13. यहाँ से आपको basic angle मिलेगा इसका. Let's see what that turns out to be. Cos inverse of 6 divided by 13. That's giving me 1.091. That's the basic angle that I'm getting. I can have one more decimal place if I want. 1.0911. That's what I'm getting. Okay. अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिमेंबर, जो इंटरवल हमें दिया हुआ था ऊपर, वो थीटा का इंटरवल था, इनफैक्ट एक्स का इंटरवल था. ऑलराइट, ऊपर जो हमें इंटरवल दिया हुआ था वो एक्स का इंटरवल था. तो हम यहाँ पे so I should have actually replaced this there as well. यहाँ पे मैंने लिखा है थीटा की जगह पे यहाँ पे 2x डाल देते हैं, because यहाँ पे जो है वो इक्वेशन x के टर्म्स में, so this is 2x and this is also 2x here, so it's 2x minus this. तो ऊपर हमारे पास इंटरवल किस फॉर्म में था? इंटरवल was for x was between 0 and pi. अब इसको आपने क्या करना है, a की टर्म्स में कन्वर्ट करना है. तो अब वो क्या हो जाएगा, a का इंटरवल क्या होएगा? आप देखें, एक दफा 0 इसमें इनपुट कर दें, x की जगह पे 0 डाल दें. If you input x equal to 0 here, what is that going to give us? That's going to give us minus 0.3948. और फिर एक दफा हम क्या करें, pi डाल दें इसके अंदर and see what that gives us. So let me calculate that. 2 pi minus 0.3948, and that's giving me 5.888 here. ठीक है. तो a का जो इंटरवल है, that is from minus 0.3948 to 5.888. ठीक है.
अब आपने क्या करना है, आपने क्वाड्रेंट्स देखने हैं, क्वाड्रेंट्स में उस इंटरवल के अंदर आपने देखना है कौन से एंगल्स आ सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर आवर क्वाड्रेंट्स। नाउ cos is supposed to be positive. cos positive किधर होता है? cos positive होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. These are the two quadrants that we're going to consider. Now let's look at the first quadrant. First quadrant में हमारे पास ये एंगल क्या बनता है? A equals 1.0911. Is that in the interval that we have? Well, that is in the interval. वो इस interval के अंदर आ रहा है. So that's one possible value of A that we have. We say A equals 1.0911. Okay. What could be another possible value for A from this? आप यहाँ पे पूरा एक सर्कल घूम के जाएं and go in the fourth quadrant. एक तो first quadrant हो सकता था, दूसरा आपका fourth quadrant हो सकता है. यहाँ पे fourth quadrant में जाने के लिए you can go like this and see what this angle turns out to be. Let's figure this out. ये angle क्या होएगा? 2 pi total angle होता है circle का, उसमें से minus कर दें 1.0911 and let's see what that turns out to be. So let me calculate that. 2 pi minus 1.0911 and that's turning out to be 5.192. Okay, this is the other value that I'm getting for A. Is this in the interval? That is also in the interval. ये भी interval के अंदर आ रही है तो इसको भी use करेंगे हम. इसे A equals 5.192. अब इससे अगर आगे जाएंगे दोबारा से तो वो इंटरवल से बाहर चले जाएगा. लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव साइड पे भी चेक कर लेना एक दफा. ठीक है, so let me actually just take it to the side a bit. We have some space here. Okay, so these are the two values of A that we're getting until now. Is there another possibility? आपके पास देखिए इंटरवल नेगेटिव साइड पे भी जा रहा है तो आप नेगेटिव साइड पे भी देखना पड़ेगा आपको. नेगेटिव साइड पे दिस इज द फर्स्ट एंगल दैट यू आर गेटिंग एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी -1.0911. नाउ दिस इज आउटसाइड दिस इंटरवल तो आप इसको नहीं कंसीडर करेंगे. ठीक है, आपके पास A की सिर्फ यही दो वैल्यूज आ रही हैं. A equals 1.0911 and A equals 5.192. What do we do at this point? वो जो ऊपर हमने substitution की थी वो वापस input कर दें and see what that gives us. 2x minus 0.3948. This is what A was. तो A की जगह पे अब वो डाल दें वापस. This should equal 1.0911. यहाँ से आपके पास x की एक वैल्यू आएगी. How would you calculate that? 1.0911 plus 0.3948. Divide that by 2 and that gives you 0.7429. So that's 743. This is one value of x that we're getting from this. ठीक है. Similarly, do the same for the other one. A की जगह पे आप वापस क्या करें? 2x minus 0.3948 डाल दें. That should equal 5.192 and calculate x from this as well. So 5.192 plus 0.3948, that divided by 2, that gives us 2.793. This is the other value of x that I'm getting from this. So the two values of x that we get as answers here, they are 0.743 and 2.793. All right, so these are the results that I'm getting from this. ये हमारे पास x की values है. Okay, I hope that makes sense. That was question number 6. Now, there were two other questions that were left from this paper that we did not do last time, and they were questions 9 and 10. Let's complete this paper. In fact, 9 हमने कर लिया था. 10 और 11 नहीं किए थे. Okay, so इसमें question number 11 भी था. So questions 10 and 11, let's do these two questions now. Yeah, Sahafi, I was actually planning to start it sometime around Thursday, Friday, but I think I'll have to do it after Eid now because I am finding it a bit difficult to get time for that. But yeah, so right after Eid, inshallah, I'll be starting that. Okay.
I'm not sure if I'll be starting IGCSE or the Cambridge, the other one, GCE level. So I'll have to decide that, GCE or IGCSE, or I might do some of both. So I'll see what happens then. So I'll be starting that most likely on Sunday or Monday, inshallah. Okay, after Eid. Most likely Monday, in fact. Okay. Let's start with this one. Question number 10. It says, with respect to the origin O, the points A, B, C, and D have position vectors given by OA, OB, सब position vectors दिए हुए हैं उन सब के. We first have to find the obtuse angle between the vectors OA and OB. Okay. Let's figure these two out. देखते हैं हमारे पास क्या आता है. सबसे पहले you need to remember the formula that you have for this. Vectors में angle के एक ही formula आपके पास cos theta equals A dot B divided by modulus of A into modulus of B. Okay, this is the formula that you have for finding angles. All you have to do is just apply this formula on OA and OB. ठीक है, अब क्या चीजें चाहिए आपको उसके लिए dot product चाहिए. So let's calculate the dot product. First of all, you have 3 minus 1 2 dot 1 2 minus 3. Let's see what that gives us. 3 into 1. 3 into 1 plus minus 1 into 2 plus 2 into minus 3. What do we get from this? 3 minus 2, that's 1. 1 minus 6, that is going to be minus 5. ठीक है? Dot product आ गया या फिर एक चीज ये चाहिए थी. You need the modulus of both of those functions as well. OA का modulus निकाल लें. That's going to be square root of 3 squared plus 1 squared plus 2 squared. What do we get from that? 9 plus 4 plus 1, that's square root of 14. इसको square root form में रहने दें exact as it is, हम calculator में डाल देंगे. OB का magnitude, what's that? That is square root of 1 square plus 2 square plus 3 square. It's the same as that. And this also turns out to be square root of 14. ठीक है, अब formula में input कर दें. We have the modulus, we have the dot product. दोनों चीजें हैं हमारे पास, तो वो इसमें input कर देते हैं. Cos theta equals the dot product, which is minus 5 divided by the magnitude of OA and the magnitude of OB. ठीक है, ये अब देख लें क्या आता है. cos inverse निकाल लें कैलकुलेटर से. minus 5 over 14 का. वेक्टर्स में अक्सर हम डिग्रीज में भी दे रहे होते हैं, सो वो आपकी चॉइस है. यहाँ पे यू कैन राइट योर आंसर इन डिग्रीज और रेडियंस, दैट डज नॉट मैटर. ठीक है, सो दिस इज गिविंग मी 110.9. दिस इज द एंगल दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस. अगर मेरे पास एक्यूट एंगल आ रहा होता, उसमें ऑब्ट्यूज मांगा यहाँ पे, अगर मेरे पास एक्यूट आ रहा होता, मुझे सिर्फ क्या करना था, 180 में से उसको माइनस कर देना था, मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूज वैल्यू मिल जाती. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसलिए इसका ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है फॉर्मूला से. अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड करना होता तो आप 180 में से बस माइनस कर देते हैं उसको. ठीक है. Yes, Hussain, actually the previous question that we did, उसका part B जो था वो paper 1 का ही concept था. So that's why अगर आपने अभी late join किया तो you might have thought that. But yeah. Okay, that was part A of question number 10. Let's move on to the next part. Part B says the line L passes through the points A and B. So we have this line L somewhere. It passes through the points A and B. Find a vector equation for the line L. Okay, so A और B से एक line pass कर रही है, उसकी आपने line L की equation निकालनी है. You have position vectors of 2 points on the line. आपको एक चीज बस और चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर चाहिए. रिमेंबर आपके पास वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? इट लुक्स लाइक दिस. R equals A plus lambda D, where A is the position vector of any point on the line and D is the direction vector. तो पॉइंट तो आपके पास दो हैं, डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकलेगा? आप वेक्टर AB निकाल लें. AB vector, that's going to give you the direction. AB is OB minus OA. Let's figure this vector out and see what that turns out to be. OB minus OA. So 1 minus 3, that gives you minus 2. And then 2 minus minus 1, that's 2 plus 1, which is 3. And then finally, we have minus 3 minus 2, that gives us minus 5. This is the vector AB. ठीक है, ये डायरेक्शन वेक्टर हो गया.
दिस इज योर डायरेक्शन। तो अब लाइन एल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? R इक्वल्स ए प्लस लैम्डा डी। ए की जगह पे आपने उन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट डाल देना है। ओ ए भी है आपके पास, ओ बी भी है, कोई भी एक डाल दें। 3 - 1 2, लेट्स से अगर मैं ये इनपुट कर दूं, 3 - 1 2, this is the point plus lambda into d. D is the direction vector. This is the direction vector that we have here. That's -2, 3, and -5. This is the equation of the line that you were looking for. ये आपने figure out कर ली। ठीक है? That was line L. Let's look at the next part. It says find the position vector of the point of intersection of the line L and the line passing through C and D. ओके, सो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? आपके पास दो लाइंस की इक्वेशन होती हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, उनको इक्वेट करते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं, राइट? अब एक लाइन की इक्वेशन तो है आपके पास, लाइन एल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। व्हाट्स द अदर लाइन? द अदर लाइन इज द लाइन दैट पासेस थ्रू सी एंड डी। अब आपको क्या करना है? सी डी की इक्वेशन निकालनी है। सी डी की इक्वेशन के लिए यू फर्स्ट नीड द डायरेक्शन सी डी। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम सी डी वेक्टर निकाल लेते हैं। Let's see what that turns out to be. CD vector, that's going to be OD minus OC. फिर से हम क्या करेंगे? OD में से OC माइनस कर देंगे, यहीं पे कर लेते हैं, बाद में एंड पे लिख लेंगे। This minus this. 5 - 1, that's going to be 4. And then -6 plus 2, that's -4. And 11 - 5, that's 6. 4 - 4 6, ये आपके पास CD vector आ गया। 4 - 4 6, this is the vector CD. ठीक है? This is the direction vector of the line CD. ये आपकी डायरेक्शन आ गई इसकी। Now what about the equation of CD? Let's write that down. इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? R equals A plus lambda D. बट यहाँ पे आपने रिमेंबर पिछले पार्ट के लिए ऑलरेडी lambda यूज किया हुआ है, so you should not be using lambda again. You should use some other letter. You can use mu for instance or anything else. It doesn't really matter. CD की इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी? The point is any one of these two. कोई भी एक पॉइंट का पोजीशन लिख लें यहाँ पे, OC या OD. Let's say अगर मैं OC यूज करता हूँ, that's 1 - 2 5. Let's write that down here. 1 - 2 5 plus mu into the direction which is 4 - 4 6. ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई, CD की इक्वेशन आ गई। अब आपको सिर्फ क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना है। ठीक है? आपके पास लाइन एल की इक्वेशन है और लाइन सी डी की इक्वेशन है। इन दोनों को इक्वेट कर दें, उससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। लेट्स इक्वेट दोस टू। लाइन एल की इक्वेशन लिख लेते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3 - 2 लैम्डा, राइट? आई एम सिंप्लीफाइंग दिस थिंग। 3 - 2 लैम्डा -1 plus 3 lambda and 2 - 5 lambda. This equals the equation of CD, which is 1 plus 4 mu minus 2 minus 4 mu and 5 plus 6 times mu. We have two equations. One is the equation of the line L. This was the equation of the line L, and the other is the equation of the line CD. हमने क्या किया? हम दोनों को equate कर दिया। अब इनको equate करने से क्या होगा? We got three equations. उनके components को अगर हम equate कर दें, this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. We have three equations. All we have to do is solve two of these three equations simultaneously and see what the values of lambda and mu turn out to be. Let's say हम equation 1 और 2 को simultaneously solve कर लेते हैं। ठीक है? कोई भी दो equations आप कर सकते हैं वैसे। Let's say मैं first 2 choose कर लेता हूँ। 3 - 2 lambda, that equals 1 plus 4 mu. That's one equation, and the other is -1 plus 3 lambda equals -2 minus 4 mu. अब इनको solve करना है simultaneously. How can we do that? We can use substitution or elimination, whatever you prefer, it doesn't matter. So one possibility could be, अगर first equation से अगर mu को subject बना लो, in fact अगर मैं 4 mu यहाँ पे लिखूँ, 4 mu क्या हो जाएगा? 1 will go to the other side, and that's going to be 3 - 1, and that's 2. 2 - 2 lambda
दूसरी इक्वेशन में 4 म्यू आ रहा है, उसी की जगह पे पूरा का पूरा मैं इनपुट कर देता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं, म्यू निकाल लें फिर उसका इनपुट करें, इवेंचुअली आपके पास वही आ जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास 4 म्यू की वैल्यू है, ये पूरी की पूरी उठा के वहां पे डाल दें 4 म्यू की जगह पे। Let's see what happens when we do that. We have -1 plus 3 lambda equals -2 minus 4 mu. 4 mu की जगह पे हम डाल देते हैं 2 minus 2 lambda. Let's solve this equation now. This gives us -1 plus 3 lambda equals -2 minus 2 plus 2 lambda. And now we get lambda equal to -2 minus 2, which is -4 plus 1. Lambda turns out to be equal to -3 from this. This is the value of lambda that I'm getting. Okay. Now put this back in the other equation and see what the corresponding value for mu turns out to be. 4 mu equals 2 minus 2 into -3. That gives us 4 mu equals 2 plus 6. And mu turns out to be 8 over 4, which is 2. So lambda turns out to be -3 and mu turns out to be 2. अब आपको फाइंड क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ऑल्दो यू डोंट नेसेसरली हैव टू डू दिस, मैं प्रूव करने के लिए नहीं कहा कि आपको ये प्रूव करने के इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते, तो आप ये डायरेक्टली लैम्डा म्यू की वैल्यूज इनपुट कर सकते थे इक्वेशंस के अंदर। बट इफ यू वांट टू जस्ट वेरीफाई योर वर्किंग, व्हाट यू कैन डू इज you can input these values of lambda and mu in the third equation just to check that that equation is also satisfied, because that will confirm कि आपकी values पे सही आ रही है। What's the third equation? The third equation is 2 minus 5 lambda equals 5 plus 6 mu. इसमें अगर आप ये values of lambda और mu input कर दें तो हमारे पास क्या आता है? 2 minus 5 into -3, that equals 5 plus 6 into 2. Let's see what we get from that. 2 plus 15, that's 17. On the right side, we have 5 plus 12, that's also 17. That means the third equation is also satisfied, which means these values should be correct. And the two lines intersect when the values of lambda and mu are -3 and 2 respectively. Now, how do we point that? How do we find that point of intersection? वो कैसे आएगा? Point of intersection का जो position vector है, आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये CD की इक्वेशन है, एक ऊपर हमारे पास L की इक्वेशन थी, और यहाँ पे भी हमने लिखी हुई है स्टेप के अंदर दोनों इक्वेशंस। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में लैम्डा या म्यू की वैल्यू इनपुट कर दें, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में इनपुट करता हूँ इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू, उससे मुझे पॉइंट मिल जाएगा। सो इट्स 3 minus 2 lambda minus 1 plus 3 lambda and 2 minus 5 lambda. This is the equation of line L. इसके अंदर lambda की वैल्यू -3 अगर हम इनपुट कर दें, let's see what we get from that. 3 minus 2 into -3, -1 plus 3 into -3, and 2 minus 5 into -3. And that's going to give us the position vector that we are looking for. ठीक है? 3 plus 6, that's 9. -1 minus 9, that's -10. And 2 plus 15, that is 17. This is the position vector of the point of intersection of these two lines that we had. And that is what we were looking for here. ठीक है? ये आपका point of intersection आ गया इन दोनों lines का. Let's move on to question number 11. Now, this is relatively simpler. This is just partial fractions. Let's do this. सबसे पहले आपको ये figure out करना है कि ये proper fraction है या improper fraction है. This is a proper fraction, right? Degree numerator की degree 2 है, denominator की 3 है, so it's a proper fraction. तो इसकी form क्या हो जाएगी फिर? We have 5x square plus x plus 11 that divides 4 plus x square into 1 plus x. Now we have one quadratic factor in the denominator and one linear factor. Quadratic factor के लिए क्या हो जाएगा? ax plus b over 4 plus x square. और फिर linear factor के लिए we just have one constant in the numerator, that's c, so c over 1 plus x. ठीक है? अब क्या करें? लेफ्ट वाला डिनोमिनेटर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दें. What do we get from that? 5x square plus x plus 11, that is identical to ax plus b. Please make sure that you use these brackets here properly. Ax plus b, this whole thing is multiplied by 1 plus x.
plus c into 4 plus x squared. And now you can input some values of x to figure out the values of a, b, and c. सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? इस bracket को 0 बनाने के लिए we can input x equals -1. Let's do that. So let's input x equals -1. When we do that, we get 5 into -1 whole squared -1 plus 11 on the left side. On the right side, this thing becomes 0. And we have c into 4 plus -1 ka square. And this simplifies to 5 minus 1, which is 4. 4 plus 11 is 15. 15 equals 5c, and the value of c turns out to be equal to 3. Okay, this is one value that we were looking for. Now, how do you find the value for a and b? उसके लिए हम एक चीज क्या कर सकते हैं? अगर x की value 0 input कर दें तो a b eliminate हो जाएगा उससे. So that's what we start from. We select, let's input x equals 0. और इसके साथ फिर आपको c की value भी ये डालनी पड़ेगी. What do we get from that? 5 into 0 squared plus 0 plus 11 on the left side. On the right side, we have a into 0, that's the 0, 0 plus b into 1 plus 0. Plus c की value 3 hai, 3 into 4 plus 0 squared. On the left side, we have 11. On the right side, we have b into 1, that's just b, plus 3 into 4, that's 12. And the value of b turns out to be -1 from this. Okay, that's the value of b that I'm getting. Now, let's input another value of x now. अब a रह गया, a आपको figure out करना है. a के लिए हम क्या कर सकते हैं? We can input x equals 1 now. 1 input करके देख लें. 1 input करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 5 into 1 square minus plus 1 plus 11. On the left side, on the right side, we have a into 1, that's just 1. Plus b, the value of b is -1, we input that here. Into 1 plus 1, plus c, which is 3, into 4 plus 1 squared. Let's simplify this. On the left side, we have 6 plus 11, that is 17. On the right side, we have a minus 1 into 2, which becomes 2a minus 2, plus 3 into 5, that's 15. And that is going to give us 2a equals 4, right? Yeah, so 2 and plus 2, yes, that becomes 4. A equals 2. A की value हमारे पास 2 आ गई यहाँ से, and that's what we were looking for here. We have the values for a, b, and c. अब वो partial fraction form में आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं. आपकी partial fractions क्या हो जाएंगी? ax plus b था ऊपर, so that's 2x minus 1 divided by 4 plus x squared plus c, which is 3 over 1 plus x, so that's 1 plus x like this. Okay, these are the partial fractions that you have. F of x can be written like this. Okay, that was the first part. Let's look at the next part now. Now in the next part, we have integration. It says, hence show that integration of f of x with limits from 0 to 2, that is equal to ln of 54 minus pi over 8. This is what we need to do now. अब देखिए आपने इसके partial fractions already figure out कर लिए वहाँ पर. अब आपको ये integration करनी है. Integration of 2x minus 1 over 4 plus x square with respect to x, that's one fraction. Then you have 3 over 1 plus x. एक आपने इसको integrate करना. Now, how do we integrate these two fractions? That's what we need to think about. So we have 2x minus 1 over 4 plus x square. It's a fraction. What rules can we apply on this? We could think of the log rule, ln rule. 4 plus x square का derivative क्या होता है? 4 plus x square का derivative is 2x. Numerator में आपके पास 2x तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ -1 भी आ रहा है. So that is not going to work, right? Tan inverse वाली form भी नहीं है ये, because numerator में आपको constant चाहिए होता है. That also doesn't work. Partial fractions हमने already कर लिया, मैं इसके further partial fractions कर नहीं सकते. That also is not going to work. So what do we do then?
What we can do in this case is we can actually split the numerator, and this is a trick that you have to use sometimes in integration. What you do here is you split the numerator into two parts. You say 2x minus 1 over 4 is 4 plus x पर लिखा हुआ है. आप एक पार्ट ये ले लो 2x over 4 plus x square और दूसरा पार्ट आप ले लो minus 1 over 4 plus x square. You split it into two parts, right? जिस तरह आपके पास अगर ऐसे कुछ लिखा हो 5 minus 2 over 3 over let's say 2, you can write it like this as well, 5 over 2 minus 2 over 2. इसको दो separate fractions में इसको split कर सकते हैं. That's exactly what we're doing here. इसको दो parts में हम split कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं. We can say this is 2x over 4 plus x square. इसका integral. Subtract from that 1 over 4 plus x square और इसका integral. And now we can try to integrate both of these fractions separately. ठीक है, इस पे भी आते हैं वापस. दूसरी फ्रैक्शन क्या है? 3 over 1 plus x. इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ये तो लॉग फॉर्म लग रही है बिकॉज डिनोमिनेटर में देखें 1 plus x है. 1 plus x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1. Can we have 1 in the numerator? Yes, we can just write 3 outside the integral. And inside we would be left with 1 over 1 plus x. ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम ln फॉर्म में लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके. ठीक है, so now let's integrate each of these three fractions. First fraction में क्या करेंगे? We have 4 plus x square in the denominator. What's the derivative of that? 2x. We have that in the numerator, so this is the log form already. इसकी integration क्या हो जाएगी? ln of 4 plus x square. Okay, that's the first fraction. What about the next one now? Does the log rule work here? No, because we have 4 plus x square. 4 plus x square का derivative 2x होता है. We can't have 2x in the numerator. उसके लिए x से multiply करना पड़ जाएगा और वो हम कर नहीं सकते. That's not allowed. Okay. तो फिर क्या करें? ये कौन सी फॉर्म है? This is actually tan inverse form. If you remember, ये फॉर्मूला शीट में ऐसे दी होती है. Integral of 1 over x square plus a square. Integral of that is equal to 1 over a into tan inverse of x over a. This is how it's written in the formula sheet. You can just use that. Numerator में आपके पास 1 है, so that's a constant. वो आप use this as it is. And in the denominator में just rearrange this. x square अगर आप पहले लिखना है, एक ही बात है, वैसे भी लिख रहने दे सकते हैं. 4 can be written as 2 squared, right? And now this is exactly that form. एक ही जगह पे आपके पास बस 2 आ गया है इस फॉर्म में. एक ही जगह पे 2 आ गया तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? 1 over a into tan inverse of x over a. Let's do that. ये पार्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं. इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 over a, that's 1 over 2 into tan inverse of x over 2. Alright, ये आपकी इंटीग्रेशन है इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड टर्म की. अभी थर्ड टर्म देख लें. 3 into 1 over 1 plus x. 1 plus x इसको हमने ऑलरेडी लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. और इसकी इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगी? 3 into ln of 1 plus x. ऑलराइट, आपके पास लिमिट्स हैं इसके अंदर तो आपको प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है. एंड पे जाके हम लिमिट्स इंपुट कर लेते हैं. लेट्स सिंपलीफाई एवरीथिंग नाउ. ln of 4 plus x square ये हमारे पास इधर से आ रहा है. सेकंड टर्म ये इंटीग्रेशन होगी. थर्ड टर्म में हमारे पास आ रहा है 3 into ln of 1 plus x. So at this point we've done the integration and now we can just input the limits. Limits are from 0 to 2. ये limits अब हमें इसके अंदर input करनी है. Remember, whenever you are solving such questions, you always have to show the process for that. आपने limits input करके दिखानी होती हैं. ठीक है? Don't just write down the final answer after the step. You have to input the limits and show your working. तो पहले हम क्या करेंगे? इसके अंदर 2 input करेंगे. When we input 2, let's see what we get. ln of 4 plus 2 squared minus 1 over 2 into tan inverse of 2 over 2 plus 3 ln of 1 plus 2. ठीक है, ये आपकी हो गई फर्स्ट लिमिट. 2 आपने इनपुट किया तो ये आपका मिल रहा है. उसमें से माइनस करना है हमें क्या? 0 वाला केस. That's going to give us ln of 4 plus 0 minus 1 over 2 into tan inverse of 0
plus 3 ln of 1 plus 0. अब इसको simplify कर लें. ln of 4 plus 4, that's ln of 8 minus 1 over 2 into tan inverse of 1. Tan inverse of 1 क्या होता है? ये आप कैलकुलेटर पे बेशक evaluate कर लें. Tan inverse of 1 होता है pi over 4. Remember 45 degrees का tan 1 होता है. Pi over 4 is 45. Pi over 4 is equivalent to 45 degrees. तो यहाँ पे tan inverse of 1 आपके पास radians में क्या value आएगी? Pi over 4 आएगी. Make sure that you're using radians here. Degrees नहीं use कर सकते. Tan inverse of 1 आप यहाँ पे लिख दोगे pi over 4. And you have plus 3 ln 3. Let's have that here. ये आपके पास होगी ये first bracket. उसमें से माइनस कर दें 0 वाला केस. इसमें आपके पास क्या आ रहा था? ln of 4. Then you have tan inverse of 0. Tan inverse of 0 जो है वो 0 ही होता है. यहाँ पे ln 1 आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा. Let's simplify this now, and this is going to give us ln of 8 minus pi over 8 plus 3 ln 3 minus ln of 4. This is what the result turns out to be. But remember, जब भी आपको इस तरह से integrate करके आपको result निकालना होता है, you always have to give the final answer as a single log term. और इस question के अंदर अगर आप देखें, उसने आपको यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए कहा हुआ है. तो आपको इस फॉर्म में लेकर जाना है. अब इस फॉर्म में क्या है? एक ln वाली टर्म है, एक pi over 8 आ रहा है. pi over 8 तो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे minus pi over 8, राइट? दूसरी आपने सिंगल ln टर्म बनानी है. वो कैसे बना सकते हैं? आपको ln के बाहर सब टर्म्स में कोएफिशिएंट 1 चाहिए होता है. तो आप पहले इनको इकट्ठा लिख लें इस तरह से. ln 8, इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ln of 3 raised to power 3. 3 को पावर में ले जाएं. And then you have minus ln 4 and the remaining term is minus pi over 8. And now this can be written as ln of, if you apply the product rule, the multiplication law and the division law together, जहाँ पे प्लस आ रहा है जिन टर्म्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वो न्यूमरेटर में आ जाएंगी. So you have 8 into 3 cube, which is 27. 4 के ln 4 के साथ माइनस है, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. So we have 4 in the denominator minus pi over 8. Let's simplify this and see what that gives us. 8 over 4 ये cancel हो जाएंगे. आपके पास 2 बचा. 2 into 27, that's going to give you 54. So you have ln of 54 minus pi over 8, and that's exactly what we had to prove here. ln of 54 minus pi over 8, ये आपने prove कर दिया. ठीक है? I hope that makes sense. That was these were the remaining questions that we had from this paper. If you want to have a look at the first part, जहाँ पे हमने बाकी सारे questions किए थे, the link for that is there in the description. But that's it for this session. I will be completing another paper tonight as well, inshallah, hopefully. And that's May June 2022. उसके भी हमने first 8 questions किए हुए थे. उसके 2 questions end पे रहते थे. I'll try to do that at some point tonight, inshallah. All right, so that's it. I'll see you again in the next session. Allah Hafiz.